Okay, so in the last class we were discussing about different matrices. Actually, today we are going to discuss some particular type of matrices. So we know matrix is a rectangular arrangement of numbers. So here we are going to discuss some particular type. Many types are there. So first one is column matrix. Column matrix matlab from the name itself, it is clear that a matrix is said to have a column matrix if it has only only one column. That type of matrices are known as column matrix. So here you can see there is a matrix 1, 2, 3, 4 rows and only one column. So we can say this is a column matrix. So order कितना आएगा इधर 4 rows. So 4 by 1. Okay. Yes, sir. Yeah. So normally हम generally लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं aij. So हमेशा मैट्रिक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं ऐसे कैपिटल ए दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए आई जे. सो मैंने बोले आपको ए आई जे दैट डिनोट्स द जनरल एलिमेंट ith रो jth कॉलम. So column only, so m rows and one column, so m by 1. So this is a standard notation. Here you can see that's a standard notation just for you to understand, that's all. It's a column matrix of order 1. Many are there, like if you write 2 5, this is a column matrix of order 2 by 1. Okay, so what about this? Is it a column matrix? Here 3, is it a column matrix? Is it a matrix? Is it a matrix? So 1 by 1 की हो सकती Yeah, है. 1 by 1. It's a matrix with one row and one column. So this also a column matrix because only one column. So if it has only one column, that type of matrix is known as column matrix. Now, row matrix. So as the name says, a row matrix, that means it has having only one row. So here you can see B matrix minus 1 by 2 root 5 2 3. So it is having one row, but you can see 1 2 3 4 columns, so 1 by 4. So a matrix having only one row is called a row matrix in general. So B is equal to Bij is equal to order आएगा B 1 by n. That means only one row. Column can be any number of columns there. So like that you can see it is 7 minus 3 2 6 0. There is only one row, 1 by 1 2 3 4 5 column. Okay, so that is known as row matrix. So इधर एक 1 by 1 matrix बोला था, that is column matrix. At the same time that is a row matrix also because there is only one row there. So only one row, that is row matrix. One column is the column matrix. So this is an example which is a row matrix as well as a column matrix. Clear? Now next one, it is square matrix. Square matrix. So square matrix मतलब उसमें से rows and columns are equal होगा. Equal number of rows. Number of rows are equal to number of columns. Rows and columns are equal. Rows and columns are equal. That means m should be equal to what? M by n में rows and columns are equal. That is known as square matrix. हम say square matrix of order n. Normally हम say, we will say like this, is a matrix of order 4 by 1, इधर matrix of order 1 by 4. So दोनों सेम है तो हमें दोनों 1 by 1 बोलने की कोई जरूरत नहीं. हम बोलते हैं it's a matrix of order 1. Matrix of square matrix of order n मतलब n rows and n columns. So here you can see there are 1
2, 3 rows, 3 columns. So this is an example of a square matrix of order 3. Okay. So like another example, -1, 6, 2, 1. So this is a 2 by 2 matrix, 2 rows and 2 columns. That's also a square matrix. So earlier हमने बोला था 3. So this is also a square matrix because 1 row and 1 column. Okay. So if the number of rows and number of columns are equal, then that matrix is known as a square matrix. We know when we say square, square matlab all the sides are equal, right? So in the same way, square matrix matlab number of rows and number of columns are equal, then it is known as a square matrix. Clear? Okay. Understood? Yes. Yeah. Yes, sir. Okay. Now we'll go to next type. So हम normally देखो इधर और एक पॉइंट मुझे बताना है आपको. So हम normally m by m rows and columns are same, और normally हम ऐसे बोलते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m ऐसे बोला है तो उसका मतलब इट इज m by m. ओके. स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 उसका मतलब इट्स अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 by 5. अभी जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जैसे A11, A22, A33 वैसे कुछ एलिमेंट्स होगा. जैसे देखेंगे तो इधर फर्स्ट एग्जांपल हमने बोला उसमें देखेंगे तो दिस एलिमेंट दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एंड दिस आप देखेंगे तो दैट इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, एंड हियर दिस -1 दैट इज थर्ड रो थर्ड कॉलम, राइट? सो दैट एलिमेंट्स A11, A22, A33, इस एलिमेंट का स्पेशलिटी क्या है? वो स्क्वायर का डायगोनल में आते हैं ना, स्क्वायर का डायगोनल में आ रहे हैं ना, राइट? Yes. Yes. सो इसलिए दैट these elements they are known as diagonal elements. Okay, they are known as so A11, A22, A33 these type of elements. So आप ऐसे भी पूछ सकते हैं सर इसके लिए दो डायगोनल है, इधर से 4 3√2 0, ये भी डायगोनल है, स्क्वायर का डायगोनल है ना वो भी. तो हम उसको डायगोनल एलिमेंट, मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स मतलब दीस एलिमेंट्स लेफ्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर को दैट डायगोनल दैट इज नोन एज डायगोनल ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स, और दैट एलिमेंट्स आर नोन एज डायगोनल एलिमेंट्स. इसको हम नॉर्मली ऑफ डायगोनल बोलते हैं. ऐसे टर्म आपको बुक में नहीं है, सिर्फ आपके लिए जनरली बता रहे हैं. उसको कभी हम ऑफ डायगोनल बोलते हैं. जैसे कौन सा इधर 4 3√2 0 उसको ऐसे बोलते हैं ऑफ डायगोनल. बट diagonal elements of a square matrix matlab those elements which are coming in the diagonal position, that is the position A11, A22, A33, A44 like that. So diagonal it is only for square, diagonal elements are only for square matrix, not for any other matrix. Diagonal elements are only for square matrix. So these elements are diagonal elements. Okay. So here in this case you can see the diagonal elements are, second example, here you can see the diagonal elements are 1 4 6. Okay. अभी देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स विच इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स. ओके. सो डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. A square matrix is said to be diagonal matrix if its all non-diagonal elements are zeros. जो diagonal elements छोड़ के बाकी सभी elements zero है तो that type of matrix are known as diagonal matrix. So आपको पता है diagonal elements are elements which come in the position A11, A22, A33, A44 ऐसे एक्सेट्रा. उसी पोजीशन में जो आ रहे एलिमेंट्स को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स. वो छोड़ के बाकी सब जीरो है तो दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स. सो ऑलवेज इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज डायगोनल एलिमेंट्स आर ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. नाउ
first example देखो 4. So there is only one element which is A11, that is a diagonal element. बाकी कोई element उधर नहीं है, so automatically it is a diagonal matrix. Second देखो the 2 by 2 matrix, so minus 1 2 they are diagonal elements, they are non-zero, बाकी सब 0. And here आप देखेंगे तो minus 1 by 2 2 3. Okay, so इसका पूरा डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ के बाकी सब क्या है, 0 है. So they are diagonal matrices. First one का order 1, second one का order 2, third one का order 3. Understood? अब मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, अब मुझे बोल देना ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्या नहीं. Is it a diagonal matrix? बताओ, is it a diagonal Yes. matrix? Hmm? Yes. Yes, because उन्होंने ऐसे कुछ नहीं बोला डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं हो सकते करके नहीं बोला. उन्होंने यही बोला है कि all its non diagonal elements are 0. जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है वो पूरा का पूरा 0 होना चाहिए. सो डायगोनल एलिमेंट 0 है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट डेफिनेशन इज ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. सो आपको इतना ही देखना नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है क्या नहीं. सो इधर तो 1, सो इधर जो एक डायगोनल एलिमेंट भी 0 आ गया उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हमें ये देखना है कि उसका जो नॉन डायगोनल, इधर अब देखते थ्री एलिमेंट्स बिलो द diagonal and 3 elements above the diagonal, both all are zeros. So this is also a diagonal matrix. Okay, so definition बोलेंगे तो Bij is equal to 0 when I is not equal to j. So I is equal to j ये तो elements होगा a11 a22 a33 a44 like that. So when I is not equal to j मतलब बाकी सब एलिमेंट 0 होना चाहिए. So उसमें से डायगोनल एलिमेंट्स में एक 0 हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. So डायगोनल मैट्रिक्स मतलब it's a square matrix whose all non-diagonal elements are 0. All its non-diagonal elements are zeros. That is known as diagonal matrix. And understood that it should be a square matrix because diagonal elements are only for rectangular के लिए diagonal है, but हम rectangle matrix के लिए कोई diagonal elements नहीं है. So diagonal elements is only for square matrices. Okay. Now next scalar matrix. Scalar matrix मतलब सबसे पहले it is a diagonal matrix. So diagonal matrix मतलब क्या हो गया, square matrix हो गया, सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया. अभी डायगोनल एलिमेंट्स बच गया. वो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, ऑल इस डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल होना चाहिए. जैसे इधर एक देखो तो 3, तो इधर आप देखेंगे तो इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज डायगोनल छोड़ के बाकी सब 0 है, बट डायगोनल एलिमेंट्स सब क्या है, सेम आ गया. तो इधर आप देखेंगे तो √3 √3 √3. So you can see that this is a square matrix first of all, and then it's a diagonal matrix because diagonal elements जो के बाकी सब कुछ 0 है. उसका all diagonal elements it came same. All diagonal elements it came same. Okay, so that type of matrix are known as scalar matrix. Okay, understood? So scalar matrix is a diagonal matrix with all its diagonal elements are equal. Got it? Understood? Yes, yes. So now next type that is known as identity matrix. आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में नंबर को जैसे 5 इंटू 1 क्या मिलते था, 5. तो हम बोलते थे 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. करेक्ट.
5 plus 0 is equal to 5. So हम बोलते हैं दा 0 is the identity element of addition, correct? तो वैसे इधर identity matrix है. Identity matrix is nothing but it's a scalar matrix, or we can say it's a square matrix. All the diagonal elements are 1. So just previous case में इधर scalar matrix में all the diagonal elements are same. It may be root 3, root 3, root 3, नहीं तो 5, 5, 5, नहीं तो 6, 6, 6. It should be same. And now it's saying if it is 1 everywhere, 1, 1, 1, 1, 1. These types of matrices are known as identity matrix. Okay. So it's a clearly it's a क्या है scalar matrix है. So every identity matrix is a scalar matrix, and also so it's a square matrix. You can say square matrix. It's a diagonal matrix because diagonal छोड़ के बाकी सभी elements 0 है, so it's a diagonal matrix, and all the diagonal elements are same, so it's a scalar matrix. In particular, all the diagonal elements are 1. That type of matrix is known as identity matrix. So this is identity matrix of order 1. This one is identity matrix of order 2. Third one is identity matrix of order 3. Okay, clear? So we have seen row matrix, column matrix, square matrix, diagonal matrix, scalar matrix, and identity matrix. Okay, clear? अभी एक्चुअली ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है एक्चुअली है. इट इज नॉट एडिशनल आइडेंटिटी, इट इज known as the multiplication identity. If you multiply matrix with this identity matrix, you will get the same matrix that we will come to later, like how to multiply two matrices and all those things that we will discuss later. But right now, just understand that what is known as identity matrix. So we have seen 6 different types of matrices: a row matrix, column matrix, square matrix, diagonal matrix, scalar matrix, and identity matrix. Okay, clear? Yes, sir. Yeah. So इसके अलावा भी matrices है. Yeah, one more we will tell now, which is zero matrix. Zero matrix मतलब zero matrix बोलते हैं, नहीं तो null matrix बोलते हैं. When if all its elements are zero. इधर ऐसे कुछ नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स होना करके कुछ नहीं है. जितना भी एलिमेंट्स है पूरा का पूरा एलिमेंट जीरो है तो उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स. सो देखो इधर जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, दिस इज जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3, zero matrix of 2 rows 3 columns, this is 1 row 2 column. ऐसे कुछ नहीं, जीरो मैट्रिक्स डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स होना करके कुछ नहीं. एनी मैट्रिक्स which is known as a zero matrix if or null matrix if all its elements are zero. Okay, all its elements are zero. Understood? And normally we denote it by, you can see that zero matrix is denoted by the symbol O, capital O. Okay, clear? Yes, sir. Yeah. Now Yes, sir. इसके अलावा भी different types of matrices है, that I am giving you an assignment. Just Google it. क्या गूगल करना? Types of matrices. Then tomorrow you have to tell me जो अभी हमने 7 डिस्कस किया, इसके अलावा भी कुछ क्या क्या मैट्रिसेस आपने देखा. ओके, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे triangular matrix. It is not in your syllabus for you, but you just know there is another thing which is known as upper triangular matrix. There is another thing known as lower triangular matrix. So वैसे just Google it. Google ले लेना, उसमें से ऐसे टाइप कर देना different type of matrices, then आपको अलग अलग टाइप्स मिलेगा. just for your general information, आपका जैसे आपका ज्ञान बढ़ने के लिए. okay, just to increase your knowledge. okay,
For Yes, sir. doing, yeah, for doing problems and all those things, जितना चाहिए हम already इधर discuss किया 7 types. Okay. Now another important concept, इसके बाद हम problems करने जाएंगे. Equality of matrices. Equality of matrices. When you can say two matrices are equal. Condition, first condition, they are of same order होना चाहिए. Second condition, each element of the first matrix should be equal to the corresponding element of the second matrix. मीन्स देखो इधर 2 3 0 1 2 3 0 दोनों का ऑर्डर 2 by 2 है 2 by 2. इधर फर्स्ट एलिमेंट 2, इधर भी फर्स्ट एलिमेंट 2, इधर फर्स्ट A12 एलिमेंट 3, इधर भी 3, इधर A21 एलिमेंट इज 0, इधर भी 0, A22 एलिमेंट इज 1, इधर भी 1. सो जितना भी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. बट इधर देखो, इधर A11 is 3 but A11 is 2 here, so they are not equal. Even though that order is same, this is of 2 by 2, this is of 2 by 2, but the corresponding elements are not equal. Either to equal, either 0, either 0, either 1, either 1, that's okay, but all the corresponding elements should be equal. Each element of the first matrix is equal to the corresponding element of the second matrix. Okay, so that is when two matrices are equal. So two matrices are equal, two conditions. First of all, their order should be same. Second, each element of A should be each element of the first matrix should be equal to the each element of the second matrix. Clear? So here two matrices are given. इक्वल है तो इक्वल है करके इसका ऑर्डर देखो 3 rows 2 columns, इधर भी 3 rows 2 columns. सो इक्वल है तो x का वैल्यू -1.5 होना चाहिए, y का वैल्यू 0 होना चाहिए, z का वैल्यू 2 होना चाहिए, a का वैल्यू √6 होना चाहिए, b का वैल्यू 3 होना चाहिए, c का वैल्यू 2 होना चाहिए. ओके, सो सिंबॉलिकली इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल वी राइट a इज इक्वल टू b, ऐसे लिख सकते हैं. Okay, so equality of matrices, two matrices are equal only when they are of the same order same होना चाहिए. Second, each element of the first matrix is equal to the corresponding element of the second matrix. That's the concept of equality of matrices.